नमस्ते। हम हैं ईप्सा एजुकेशन चैनल पर। आज हम कर रहे हैं सम केमिस्ट्री। ओके, वी आर डूइंग द टॉपिक सोप। कार्बन एंड कंपाउंड्स एक चैप्टर है क्लास 10 में या 9th में भी है कुछ लोगों को। उसका एक छोटा सा पार्ट है सोप्स, कि सोप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, अंदर केमिकली जब हम कपड़े धोते हैं तो अंदर की केमिस्ट्री क्या चल रही होती है कपड़े धोने में। तो वो सब के बारे में सोप्स एक टॉपिक है, वो कवर होता है। ठीक है, हम इसको 3-4 एपिसोड्स में करेंगे, धीरे धीरे आराम से, एकदम। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आज हम कर रहे हैं पार्ट ए ऑफ सोप्स, जिसमें विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप। ठीक है, वेरी स्लोली, दो आई हैव रिटन इट डाउन बट आई विल एक्सप्लेन इट स्लोली। ओके, नाउ एज यू कैन सी, ये बड़ा फनी सा स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है बलून है। So there is this zigzag, 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 and then there is a round thing. तो ये क्या है, उसको टेल लिखा है और उसको हेड लिखा है, एंड पूरा का पूरा लिखा है कि दिस फुल थिंग इज अ सोप मॉलिक्यूल। अब जैसे पानी का मॉलिक्यूल होता है H2O, मीथेन का मॉलिक्यूल होता है CH4, ऐसे ये भी एक सोप पार्ट, एक सोप का मॉलिक्यूल है ना। व्हाट डज दैट मीन? हमने हाइड्रोकार्बन्स किए हैं। सपोज आई राइट C5H12। ओके, तो इसका नाम आप क्या बताओगे? पेंटेन। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है और एल्केन नजर आ रहा है, सो पेंटेन। अगर मैं C3H6 लिख दूंगी, आप बोलोगे प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है और एल्कीन नजर आ रहा है। ऐसे ये जो पार्ट होता है ना, जिगजैग वाला, टेल वाला, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ समथिंग सिमिलर टू अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मतलब उसमें भी जो टेल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी कुछ कुछ, नॉट एग्जैक्टली, इट इज मेड अप ऑफ मैनी 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 कार्बन्स, और यहाँ हाइड्रोजन्स सब जगह, और it is something like this. The zigzag part, the tail, is made up of something like this. A long chain. It's called a long chain. Long chain of carbons. अब कार्बन्स होंगे तो हाइड्रोजन्स भी होंगे, और भी कुछ होगा, कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा. So this is simplified, just to understand what is this zigzag like. So basically there's some form of हाइड्रोकार्बन, कुछ हाइड्रोकार्बन जैसी चीज है. अब लॉन्ग चेन का मतलब 5 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन. एक टिपिकल स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस में हमारे जो सोप है उसमें C17 होते हैं. जो हमारे स्टैंडर्डाइज सिलेबस में कार्बन का नंबर है, दैट इज 17. ओके, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. We will not be able to understand why it is called like this, because 17 तक का हमें वो नहीं पता. ऑक्टेव पता है, नोनेन पता है, डेकेन पता है, पर उसके बाद का हमें वो नॉमेनक्लेचर नहीं आता है. तो we'll just learn the name itself. So इसमें 17 कार्बन एटम्स हैं, if they ask, and इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट. ठीक है, so we just have to learn this formula of the soap which is in our syllabus and learn the word name. It's sodium stearate.
अब स्टीयरेट तो ठीक है, ये होगा कुछ कार्बन, यहाँ पे 17 कार्बन होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट्स स्टीयरेट. व्हाट इज दिस सोडियम? सोडियम तो कहीं नजर नहीं आता. So this is the catch. Now, once we have finished with the tail, now let's come to the head. My God, this pen is so dark. Let's come to the head. The head जो हमने ऐसे बलून के जैसे बना रखा है, it's not pure sodium. Uh, it is some compound of, not compound, some ion of sodium. सोडियम सल्फोनेट बहुत टाइप के होते हैं, इसमें सोडियम सल्फोनेट, यू डोंट नीड टू राइट दैट, जस्ट फॉर टेलिंग पर्पसेस आई एम सेइंग. सोडियम sulfonate, there are many types, but there's some complicated ion of sodium. Now what happens is this long chain somehow gets attached to this ion, all right, and together they make up the soap molecule. Once they stick to each other, long chains carbon and the sodium part, the balloon part, they stick to each other like this, and that forms the sodium molecule. I hope the basic thing is clear. The name is sodium, so stearate of what we are learning. 17 hydrogens, 35, so 17 carbons, 35 hydrogens, and sodium. Okay. Now, what about? Let's know little more about tail. ठीक है. अब आप एक सिनेरियो अज्यूम करो कि हम कपड़े धो रहे हैं. चलो एक ही कपड़ा धो रहे हैं. उस कपड़े पे कोई ऑयल का स्टेन आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम उसको पानी में भिगोएंगे. वील पुट सम सोप डिटर्जेंट समथिंग इन इट, वील रब इट, और फिर पानी से निकाल के उसको धो देंगे, मतलब ड्राई इट. दैट्स व्हाट इज द प्रोसीजर. डिप इट इन वाटर, पुट द सोप, scrub it, and then leave it for drying. अब ये जो पार्ट होता है ना, let's come back to tail again. Suppose this is the cloth. Will I know how to make a shirt? Okay, let me try to make a shirt. Please don't laugh. I'm trying my best to make a shirt or a t-shirt. Not bad. I don't know how many sleeves this is. Half sleeve. Okay. So this is a shirt, and there is a stain here. यहाँ पे oil लग गया. Okay. And now हमने क्या किया? हमने इसको भी put it in the water, and we added this soap molecule. Obviously you can't add one molecule. आपने उसमें थोड़ा सा soap डाला. जैसे आपने soap डाला, what happens is this part, the tail part, is a little scared of water. Now you can't say scared. It's not a. It doesn't have feelings. It repels water. The chemistry language will be, the science language will be, it repels water. It does not like water. It like to stay away from the water. So, but it likes to stick to oily parts, dust, oil, all these things. It likes to stick to them. So that's what I've written. It repels water. It wants to stay away. अब पानी में डाल दो दिया ही है, तो stay away का मतलब वो it will not go away, but it will try to be away, and it sticks to the dirt and oil. So what will happen here? This soap will tail will stick to this oil. Okay. Now what will happen to the head? Contrast में, the head really likes to hug water.
It likes to stay with water and not with the dirt and all. अब पहले तेल उसके साथ चिपक गई है, तो अब व्हाट इज द सोल्यूशन? उसके पास ऑप्शन क्या है? उसको यहीं रहना पड़ेगा ना, वो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, इट कांट स्टिक टू द डर्ट, और तेल ने जगह ले ली है, सो इट विल हैव टू stay close to the water, it will have to hold the water, it sticks to the water. ऐसे there's this bonding that happens, not pure bonding, but they stay together. So this is what happens when you put, आपने पानी लिया, आपने कपड़ा डाला गंदा, उसके अंदर आपने सोप डाला, उसमें से एक मॉलिक्यूल में आई एम एग्जिबिटिंग कि दिस इज व्हाट हैपेंस, द स्टेल, दिस इज ऑयल, the tail sticks here and the head part stays away. Now, one important part, that the bond between, I hope you can see, the bonding between the oil or the dirt, sorry for the writing, and cloth is not very strong. Now, what does that mean? That means, suppose this is my soap molecule, okay? This is my long chain, zigzag, 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 okay? I'll get it close. This is the long chain, zigzag, zigzag, and this is the head, the sodium part, okay? This is my soap molecule. Now, this is my cloth, which is dirty here. So, जब हमने उसको पानी वानी में डाला तो ऐसे चिपक गया, ठीक है? Now, there are three parts, एक कपड़ा, एक टेल, एक हेड. Now, this bond is very strong, ये नहीं टूटेगा, इसको घिसोगे करोगे, this will not break, it will not break, see, it's not breaking, okay? But this bond between the cloth and the tail is not strong at all. आप उसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ोगे ना, this will break off along with the dirt. I can change this. A bond between oil and dirt and tail is very strong. Actually, 4 पार्ट हो गए थे. क्लॉथ था, फिर ये ब्लैक जो थी ये डर्ट है, फिर टेल आ गई थी, फिर हेड आ गया था. सो दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये नहीं टूटा. टेल का और ऑयल का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये ब्लैक चीज का, और टेल का स्ट्रॉन्ग बहुत था. हम इसको ऐसे किया, इट डिड नॉट ब्रेक. बट डर्ट का और कपड़े का bond was weak. Dirt and cloth bond were very weak. So when we tried to rub it, that broke. So अब बचा क्या? So you have, if I make a thing, you have a cloth. उसके साथ क्या attached है? उसके ऊपर oil attached है. उसके ऊपर zigzag tail attached है. और उसके ऊपर head attached. This is the sequence. This is the sequence. Now we rub it. When we rub it, this bond नहीं टूटता, it's strong. ये bond नहीं टूटता, it's very strong. But this bond is weak. The cloth and oil strong bond is weak. जब हम इसको रगड़ते हैं ना, वो यहाँ से टूट जाता है. Alright. So this part stays together and the cloth becomes separate. तो क्या हुआ? क्लॉथ अलग रह गया और ऑयल और बाकी जो भी बचा वो सब अलग चला गया. What was the purpose of
doing all this was to clean the cloth using the soap. अब सोप ने क्या किया, ऑयल ने को अपने आप से चिपका दिया और removed it from the cloth. So the purpose has been solved. So cloth became clean. ये पानी वानी में आ जाता है, फिर हम उसको धो के ड्राई करने डाल देते हैं. So you get a clean cloth. After this, you get a clean cloth. That's how it. थोड़ा फंक्शनिंग भी आ गई, एक्चुअली काफ़ी फंक्शनिंग भी आ गई, बट आई इंटेंडेड टू जस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर. एनीवेज, नाउ कम टू वर्ड्स जो मैंने नहीं बताए हैं अभी तक. हाइड्रोफोबिक. व्हाट इज फोबिया? इट्स अ वेरी जनरल इंग्लिश वर्ड, बहुत कॉमन होता है. क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिक, there are many. So phobia basically मतलब कि डर लगता है, हम उससे दूर रहना चाहते हैं. So tail is hydrophobic. Hydro means what? Hydro means पानी, and phobia means डर लगना. I hope those who can read Hindi will be able to understand. Hydrophobic. Tail is hydrophobic. वो पानी से डरती है, या वो it likes to stay away from water. But that's why, see, the tail was away from water and it got stuck to the oil. Hydrophobic. This tail is not liking to go and attach itself to the water, but it attached itself. While the head part of whatever structure it has is hydrophilic. See, there's a part hydro, which you know is called means water. Philic means attraction. This means attract. तो जो हेड पार्ट है, इट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, इट अटैचेस इटसेल्फ टू वाटर. जैसे हमने यहाँ देखा है कि यहाँ सब पानी था. आई डोंट वांट टू मेक इट डर्टी, इट वाज ऑल वाटर हियर. ये सब एक बकेट में हो रहा है ना, तो यहाँ सब पानी था. दिस वेंट एंड अटैच्ड इटसेल्फ टू सम वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे सब पानी पानी. ओके, आई जस्ट मेक वाटर वाटर वाटर. ये सब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं. This tail went and attached, not the tail, the head went and attached itself to the water. So we say that the tail is hydrophobic and the head is hydrophilic. Alright, so this can very easily come in objectives or MCQs or something. I hope the structure of SOAP is clear. We'll have a B part where we'll understand how it functions. A part of it, so it's already done. Just little more details about how a soap cleans a cloth. Thank you. All the best.